do you mean by tables? Yes, anyone? Yes, Garvit, what do you mean by tables? What are tables? Jalash? Yes, anyone? What do you mean by tables? Why we use tables? Ma'am, tables provide us where to arrange data in form of Tables? rows and columns. Okay, Ma'am, tables. they provide us where to arrange data in form of rows and Correct. columns. Provide us a way to arrange data in the form of rows and columns. Okay, in the form of rows and columns. Okay, in HTML, we have table tag to create the tables. We will start creating the table by using the table tag. First of all, structure. What is a structure for creating table? Because we are using multiple tags for creating table. हमारे पास बहुत सारे टैग्स यूज होंगे टू क्रिएट अ टेबल जैसे HTML वेब पेज का स्ट्रक्चर है वैसे ही हम स्ट्रक्चर टेबल का स्ट्रक्चर करेंगे स्ट्रक्चर फॉर क्रिएटिंग अ टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग द टेबल बाय यूजिंग द टेबल टैग after using the table tag the first thing that we will do is define the table rows we will do the coding row wise so first of all we will do the first row by using the tr tag. We will start the table by using the table tag. After that, we start the first row by using the tr tag. In tr tag, first row start हो गई. First row में मेरे पास कितने columns हैं, कितने cells हैं. Each cell is defined with the help of td tag. Each cell is defined with the help of td tag. Open td tag, type the data, close the td tag. That is the first cell. That will be the first value of the first cell. Okay. Then we are having the td data, td second cell. So as many cells are there, as many td tags will be used. क्लोज टीडी जितने आपके पास कॉलम्स हैं जितने आपके फर्स्ट रो में सेल्स हैं उतने हमारे पास टीडी टैग यूज होंगे every cell will be defined with the opening td tag type the data close the td tag then we will close the tr tag for finishing the first row this is my first row is finished फर्स्ट रो वाइज कोडिंग हो रही है एक रो फिनिश हो गई है सो एज मेनी रोज आर देयर जितनी हमारे पास रोज हैं उतने टाइम वी विल रिपीट द स्टेप अगेन वी विल स्टार्ट द कोडिंग विद tr tag type the td tags give the values for the each cell close the tr tag and after completing the full table we will close the table tag yes Jalashveer यस मैम आपने मैम हैंड जैसे जब आपने हमें मैम जैसे आपने टेबल टैग कराया था पिछले टर्म में मैम आपने टीएच टैग की मैम डेफिनेशन लिखवाई थी बट टीएच टैग यूज मैं नहीं अभी किया यूज करवा रही हूँ पहले बेसिक स्ट्रक्चर करो मैं अभी आज सारा करेंगे टेबल टैग का ठीक है th tag is also used to define the content of a cell but usually it is used at the in the first row because table head th tag is used to define the content of the cell similarly as td define the only difference is कि th के साथ हम जो डाटा डिफाइन करते हैं वो ऑटोमेटिकली बोल्ड होता है और सेल के सेंटर में होता है अलाइन सेंटर होती है तो दैट मीन जो बोल्ड और सेंटर अलाइन जो एट्रीब्यूट है दे आर यूजुअली नीडेड एट द हेडिंग जैसे रोल नंबर है नेम है मार्क्स है ग्रेड है मुझे हेडिंग देने हैं कॉलम्स के तो यूजुअली जो फर्स्ट रो हम डिफाइन करते हैं वो इंस्टेड ऑफ टीडी टैग वी डिफाइन विद द हेल्प ऑफ टीएच टैग so that it becomes bold and in the center of the cell after that all the rows are defined with the td tag but this हम th tag कहीं और यूज नहीं कर सकते हम कहीं भी यूज कर सकते हैं instead of td tag or th tag td table data th table head that is why it is usually given in the first row to define the values for first row cells so that they becomes bold and in the center ठीक है नाउ एट्रीब्यूट्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर नोट डाउन कर लो देन नोट डाउन द वेरियस एट्रीब्यूट्स बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं कुछ आपको बुक में दिए हैं कुछ नहीं दिए हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन गिव द बीजी कलर like we can give the background color of the table
Then you can give the background attribute, जैसे हम वेब पेज में body का background attribute use करते हैं to define some image as a background of the table. background के table के background में कोई image set करनी है, then you can use the background attribute. Then you can have the border attribute to define the borders of the cell. It is given in pixels, in the number of pixels कि कितने pixel thick मुझे border चाहिए table का. Then border color to define the color of your border. Table के border का color क्या होना चाहिए? By default it is gray. ठीक है? By default it will be gray and you can define the border color. Any color, red, blue, green, yellow, whatever color you want, you can give the color name as well as you can give the color code. Then you can have the height. What should be the height of my table? मेरा table का size कितना होना चाहिए? Height और width कितनी होनी चाहिए? Then you can give the align. मेरा टेबल जो है वेब पेज के सेंटर में हो, लेफ्ट साइड पे हो या राइट साइड पे हो. Alignment of the table where the table should appear, whether it is in the center, whether it is in the right side or whether it is on the left side. Then we can have the cell spacing and cell padding. Cell spacing and cell padding. Cell spacing means the distance between two adjacent cells. जो मेरा टेबल बना है, टेबल में जो सेल्स बन रहे हैं वो सेल्स बिल्कुल साथ से एक दूसरे के एडजेसेंट ज्वाइनिंग होने चाहिए या उनमें थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए. तो जितना डिस्टेंस होना चाहिए दैट इज स्पेसिफाइड बाय द सेल स्पेसिंग. डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट सेल्स. ठीक है. Cell padding. Cell padding is set the margins within a cell. Margins, I told you, the blank space. Margin within a cell means the distance from the border to the content of the cell. मेरा border और text जो cell के अंदर लिखा है उसके बीच में कितना distance है, that is called cell padding. Distance between cell border and its content. सेल का कंटेंट और बॉर्डर के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ सेल पैडिंग. बोथ द वैल्यूज आर गिवन इन द नंबर ऑफ पिक्सेल्स. बोथ द वैल्यूज आर गिवन इन द नंबर ऑफ पिक्सेल्स. नोट डाउन हो गया बेटा सबका? आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द कोडिंग. हाँ जी, नोट डाउन हो गया बेटा सबका ये? ओके, नाउ स्टार्ट विद द वेब पेज. HTML. Then head, we are going to insert title. Title is today using tables. Okay, close the title tag, then close the head tag. You can note down the coding side by side. Now I'm going to start with the body tag. Body bg color equals to, suppose I'm giving today teal. Background color of my page is teal. Now I want to start with table tag. Table. Okay, first of all I'm giving, suppose first row tr. Then I'm not using any attribute. Table में मैं अभी कोई attribute use नहीं कर रही. tr first row start हो गई. Next क्या आएगा? Yes, anyone? TD tag. TD tag में I'm going to give the first value of my cell. Suppose I'm giving roll number. ठीक है? Then close the TD tag. Again start second value. Suppose I'm giving name. Then close the TD tag. Then again third value TD. Then give suppose marks. Then TD tag close and again fourth, मेरे पास 4 कॉलम है, suppose grade, so I'm closing the TD tag. Now first row suppose मेरी complete हो गई है, then what will I do? I will close my TR tag. This is my first row. This is your first row that is completed. You can make it tab लगा के आप इसको ऐसे present कर सकते हैं कि now this is your first row complete.
Now I want to start with the second row. What will I do? क्या लिखेंगे? Yes, what should मैम I टी type? आर TR. टी आर I will type with TR. Now, मैम now टी डी TD. ठीक है, suppose roll number है 12, close TD. Then second TD, suppose the name is close TD. Then marks, suppose 78, then close TD, and then grade, fourth column, suppose B, then close TD. Now second row is complete. I will close the TR tag and then I'm going to close the table tag also. Okay, now close body and then close HTML. Now complete web page, save it. .html, save. Now open any web browser, then open your web page. Now we will see कि उसकी output कैसे आ रही है table की. Now we had not used any that you can say attribute, so there will be no border even. Now background color is there. ठीक है, roll number, name, marks, grade. 12 name, then marks, then grade. Now there is no attribute we had used. So first attribute that we are going to use here is border equals to suppose 3. It will be 3 pixels thick border. Save it, go to the browser, refresh it. Now see, gray border by default, okay? 3 pixels thick border, you can give border color. Okay, again, go back to the window, Alt plus tab to switch. Then you can give border color equals to, suppose I'm giving it as black. Okay, you can give white, you can give any color. And suppose I'm giving it as 2 pixels. Save it, Control plus S, Alt plus tab, go to the browser, refresh F5. Now see, this is the black border of 2 pixels thick. Now you can see there is a distance between two cells, roll number or name के बीच में. Then there is a distance between name and marks. Cells का जो border आ रहा है, cells के अंदर आपके पास distance आ रहा है. That is the cell spacing. That is your cell spacing. By default cell spacing. ठीक है? Similarly, you can see कि 12 और border, जो cell का border है और 12 लिखा है, इनमें कोई distance नहीं है. बहुत कम distance है by default 2 pixels का. So this is your cell padding. This is your cell padding. B में देखो, B और border में कोई distance नहीं है. 78 और border में कोई distance नहीं है. And we had not given any alignment also. हमने कोई alignment भी set नहीं करी. So all these things can be set with the help of various properties. Now I'm going to set. Now एक चीज और नोटिस करो, यहाँ पर हमने TD के साथ डिफाइन किया, all the values are defined equally, एक जैसी नजर आ रही है. But when we define this first row, instead of TD, TH, मैं यहाँ पर TD के बजाय TH यूज कर रही हूँ फर्स्ट रो में. So what will happen? Now every जो आपका सेल है जो हमने TH के साथ डिफाइन किया है, that will be in bold and in the center. Save it, go to the browser, refresh it. Now see, the values are automatically bold. Table head, TH. TH के साथ जो values define होंगी, they will be in bold. Yes, Jalash, a point clear है? Yes, ma'am. Yes, Jasleen, Drishti, Arshia, Himanshi, beta, is it clear? Okay. Hanji. Next, we are going to use cell spacing, cell padding, and BG color. BG color
equals to, suppose I am giving here some cyan, the background color will be applied. Okay. Suppose then I'm going to give cell padding. Cell padding is the distance from the border to the value of the cell. I'm giving 20. Okay. Now save it. Go to the browser, refresh it. Now see, cyan color, background color आ गया. Cell spacing देखो अब 12 और border के बीच में पहले distance बिल्कुल कम था. B और इसमें distance कम था 78 में देखो और कम है. Border और values के बीच में distance है अब. That is cell padding. That is cell padding. See, now if I give cell spacing equals to suppose 10. Save it. Now see, the distance between cells. ये देखो, ये is a distance. That distance has been increased. Yes, Ashima, Nandini, Drishti, Sanya. Is it clear, Rudra? Cell spacing and cell padding both are clear? Now Yes, I'm not. ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, now I'm not going to use this cell spacing or cell padding. I'm going to use height equals to suppose 200 pixel and width equals to suppose 300 pixel. That will be the height and width of my table, whole table. And align equals to, I'm going to give it as suppose right. So now the table will be on right hand side of the page. Save it, refresh it here. Now see, one, height and width is changed. Height and width is changed. पूरे टेबल की हाइट और विड्थ इतनी आ गई है. मोर रोज ऐड करेंगे, ऐड हो जाएंगी, हाइट और विड्थ इतनी रहेगी एंड इट विल बी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पेज बिकॉज अलाइन इक्वल्स टू राइट. ठीक है. इफ आई ऐड मोर रोज, आई एम एडिंग मोर रोज हियर. ठीक है. Suppose I am changing the values 34. Marks. Wait. Okay. Save it. Go to the browser. Refresh it. Now see, table की height उतनी है, but rows divide हो गई. Now cell spacing या cell padding कुछ नहीं दिया हुआ. We can give the align towards the right hand side. ठीक है. Now all the attributes we had done: border, border color, BG color, height, width, align, cell spacing, and cell padding. Now there are a few attributes which can be given with the TR and TH and TD tag. कुछ एट्रीब्यूट्स है जो हम पूरे टेबल को अप्लाई करते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स है जो हमें एक पर्टिकुलर रो को अप्लाई करने हैं. लाइक मुझे फर्स्ट रो का कलर चेंज करना है. आई कैन गिव TR BG color equals to suppose which color I want, suppose green. ठीक है. तो अब ये क्या होगा, पूरी फर्स्ट रो का कलर ग्रीन है, बाकी टेबल का कलर सियान है, बट फर्स्ट जो रो है दैट विल बी ऑफ ग्रीन कलर. सो आई कैन गिव इट फाइल, सेव, go to the browser, refresh. See, only first row that is of green color. Similarly, you can give the color, background color, and you can give the alignment of particular row and of particular cell also. Suppose TRBG color equals to, हमने green दे दिया, first row का color green आ गया. Okay, done. Then we can give the BG color of each and every cell by using the BG color attribute in TD or TH tag also. हम हर एक TD tag के अंदर BG color use कर सकते हैं. We can give separate color for each row. We can give separate color for each cell also. BG color equals to suppose red. ठीक है.
सेकंड सेल की वैल्यू है, सेकंड सेल में सपोज कुछ और कलर देना है तो आप यहाँ दे सकते हो, नहीं तो मुझे यहाँ पर भी थर्ड जो रोल नंबर वाला वैल्यू है उसको रेड कलर देना है, तो आई कैन गिव लाइक दिस, सेव इट। सी बीजी कलर ऑफ ईच सेल, बीजी कलर ऑफ ईच रो, अगर रो में देंगे टीआर में देंगे तो दैट रो कलर विल बी अप्लाइड टू ऑल द सेल्स ऑफ दैट रो, बट इफ वी डिफाइन द बीजी कलर इन particular td or th tag, then it will be applied to that particular cell. Clear? Okay, similarly you can give the alignments, you can give the alignment. Suppose मेरे पास अभी जो values आ रही हैं they all are left aligned, I want कि जो मेरी फर्स्ट रो है इसकी अलाइनमेंट सेंटर होनी चाहिए या राइट होनी चाहिए, I want to give it as center। तो मेरे पास जो 12 रोल नंबर का जो वैल्यू है, जो रोल नंबर का रिकॉर्ड है, दैट विल अपीयर इन सेंटर नाउ बिकॉज मैंने टीआर में दिया अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। रिफ्रेश, सी फर्स्ट रो का कंटेंट जो है वो सेंटर में आ रहा है, बाकी का रो अभी भी लेफ्ट में आ रहे हैं। टेबल में जो अलाइन एट्रीब्यूट यूज करेंगे दैट विल बी द पोजीशन ऑफ टेबल ऑन अ वेब पेज, ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट और ऑन द सेंटर। यहाँ पर जो हमने अलाइन एट्रीब्यूट यूज किया है दैट इज ओनली द पोजीशन ऑफ द टेबल, नॉट द पोजीशन ऑफ द डाटा, नॉट द कंटेंट। टीएच के साथ हमने जो वैल्यूज डिफाइन करी थी दे वर ऑलरेडी इन द सेंटर एंड बोल्ड, उसके लिए जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने जो टीआर में अलाइन सेंटर यूज किया दैट मीन दीज वैल्यूज विल अपीयर इन द सेंटर ऑफ द वेब, सेंटर ऑफ द सेल्स। Similarly, we can give the alignments with the each data. Suppose मुझे यहाँ पर पूरी रो को सेंटर अलाइन नहीं करना, I am not going to give the center align to complete row. I want to give कि ठीक है मेरा जो TD first roll number है that should appear in the center, align equals to center, ठीक है। जो name है that should appear on the right hand side, align equals to right, ठीक है। देन सपोज जो 78 वैल्यू है ये दोबारा सेंटर में होनी चाहिए, अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। देन जो मेरे पास बी ग्रेड है दैट शुड अपीयर ऑन राइट हैंड साइड। तो आप इस तरह से अलग अलग वैल्यूज भी दे सकते हो। ओके, सेव इट, गो टू द ब्राउजर, रिफ्रेश इट। नाउ 12 एंड 78 सेंटर में आ रहे हैं, this name and this grade they are in the right hand side, so you can give the individual alignment for each cell। आप हर सेल की अलग अलग अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हो। ओके, गॉट इट? अंशी बेटा, एनी डाउट? अलाइनमेंट इज क्लियर? यस मैम। टेबल में जो अलाइन एट्रीब्यूट यूज होगा दैट इज यूज टू प्लेस द टेबल ऑन अ वेब पेज, एंड हेयर अगर सपोज मैं इसको यहाँ पे करती हूँ सेंटर, ठीक है, तो नाउ टेबल विल अपीयर इन द सेंटर ऑफ द वेब पेज, नॉट द कंटेंट। कंटेंट के लिए आपको या तो टीआर में अलाइनमेंट एट्रीब्यूट यूज करना है या आपको टीडी या टीएच के साथ अलाइनमेंट एट्रीब्यूट को यूज करना है। क्लियर है? हाँ जी बेटा, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है टेबल में? so that I can give you next। Note down हुआ? Had you noted down the coding? Okay. Yes ma'am। Okay, here I'm giving a line equals to center, ठीक है, for the complete row। You can give the center alignment for each row। हम हर रो के लिए भी दे सकते हैं so that कि अगर मुझे सारी वैल्यूज को नहीं करना, सारी वैल्यूज को सेंटर में करना है या राइट पे करना है,
So then there is also a V align. This is your horizontal alignment, left, right, or center. Now there is also V align attribute, vertical alignment, top, middle, bottom. आपकी values cell में top में होनी चाहिए, middle में होनी चाहिए या bottom पे होनी चाहिए. That is your TD V align. V align attribute is equal to, suppose I am giving it as bottom. Save it. See in the browser. Now see, this value is at the bottom now. This was appearing in the center, in the middle of the cell. Now it is appearing in the bottom. By default, middle में आ रही है, ठीक है? But here मैंने क्या दिया? V align equals to bottom. Vertical alignment bottom. Horizontal alignment row की center में है. All the values will appear in the center. But V align मैंने bottom दिया, so that go to the bottom align. Now I can give it as top also. Save it. Go to the browser and refresh it. Now it is at the top. So you have to give the alignment for each and every cell. ऐसा provide कर सकते हो. Clear? Yes. Any doubt to anyone? No, ma'am. Anji. Suppose I'm giving here V align equals to bottom. Let's see whether it applies to the complete row. See, complete row is now bottom aligned. Okay, complete row is now bottom aligned. This is V align. Vertical alignment. This is not given in your book. ठीक है, आप इसको use कर सकते हैं. Now, suppose I'm adding more rows. So what will happen? The height and width will remain same, but more rows will be added. I'm copying it, pasting it. Okay, suppose I'm changing the name here and values of roll number. Save it. Now see. See, now it is bottom align because वहां पे TR में हमने V align use किया हुआ है bottom. हाँ जी, background color, BG color, then border color. You can give any border color. You can give any BG color. You can give the width of the border, and you can give the this cell को भी particular हम border दे सकते हैं. Suppose एक particular row को border change करना है. So you can have border equals to 5. Save it. Go to the browser. Refresh it. Okay. TR में border नहीं यूज होगा. आपके बुक में दिया हुआ है बेटा, बट उसको थोड़ा करेक्ट कर लो. TR में आपके पास border और border color दोनों यूज नहीं होंगे. border और border color सिर्फ टेबल में यूज होगा. ठीक है? हाँ जी, टेबल में किसी को कोई डाउट? If you want to give some heading at the top, टेबल से पहले heading देना है, कैसे दोगे? I want to give the heading result of class 7. कैसे लिखेंगे? Anyone? Yes. Anyone? How we will write the heading at the table का heading कैसे दोगे? मैम TH टैग. हाँ जी. मैम TH टैग. No. टेबल से पहले है. Before starting the table tag, मैम top पे. You can use any मैम tag. Either H1. you can use the H1 or H2, or you can also use the font tag to specify the attributes of that particular font. Suppose I am giving here font color equals to suppose white. ठीक है? Size equals to 6, and I want to type in the center
So I'm giving here the center tag also. Center. Then I'm typing result of class 7. अगर मुझे TH ऊपर लिखना है तो क्या करेंगे? Center. Then I'm closing the font tag. Okay. Now font, I'm using the font tag, then I'm using the center tag, typing the text, then I'm closing the center tag, then I'm closing the font tag. Now what will happen? Save it, go to the browser and refresh it. Now this result of class 7, this will appear at the top. Okay. Now tell me how I can type this th as superscript. ये मैंने कल आपको कराया था. How I will type this th as superscript? Ma'am, SUP, TH, SUP close. Okay. Before SUP, th, I will close. type sup, and after th, I will close sup. Save it. Go to the browser and refresh it. Now see. Clear? Yes, ma'am. Hanji beta, font tag is also clear. How to use the font tag, how to use the center tag. Okay? Okay, all of you will practice this because in this week you will have the test for this. Okay? Excuse Okay, me, ma'am. ma'am. Yes, bachcha, bolo. मैम इधर दिया हुआ चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम फॉर्म टर्म 1 भी आएगा, वो सिलेबस में है?